dependency theory. Now the question is, what is dependency theory? If you remember, I told you the last theory that we were dealing with was modernization theory. Modernization theory, as you remember, was given by Walt Rostow, Daniel Lerner. These are the two main important proponents of modernization theory. And modernization theory simply believes that traditional Asian societies are underdeveloped and they can be developed only with our help, with the help of the West. Okay. And why those countries are underdeveloped? Because of their cultural values, because of their internal cultural values. ठीक है? And what kind of cultural values? Modernization theory found flaws in the non-Western societies. Found flaws in the non-Western societies. Okay. What kind of flaws? Culture of fatalism, large families, lack of savings, corruption as well. Corruption बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नॉन वेस्ट सोसाइटीज का. And then government intervenes a lot. Intervenes in market, which means state regulated market. These are the issues with traditional societies, the non-Western societies. Okay. Why do we have corruption? Because of obvious reason. When state is regulating market, so it is obvious corruption will be there. देखो जितने भी घोटाले हुए इंडिया में, whether it is 2G, whether it is Colgate, all these corruptions were related to private sector, nexus between government and corporate. 2G scam, Colgate scam, nexus between government and corporate. When state regulates the market, what would happen? To ensure that market do not feel over-regulated by the state, market would offer certain compensation to the state, in the sense to the government. Okay. Many lobbies would be formed to pressurize government or to make some relaxation for any kind of infrastructure development program, so that they don't have to pay heavy taxes to the government. And in the whole process, corruption will make its way. These are the inherent issues in the non-Western societies, and therefore they suggestion, follow our model, that is aeroplane. Aeroplane model. Okay. Aeroplane model, as you know, starts with, this is the first stage of society, the first stage, which is traditional society, and then finally take off, drive towards maturity, and then finally mass consumption. And how will
the Western countries help traditional society to reach this point, mass consumption? The Western societies will help traditional societies by providing them loan assistance, IMF, World Bank. They were established only and only to help the non-Western societies, to give them loan. IMF का काम क्या था? What was the objective of IMF? The objective of IMF was to fix the balance of payment deficit. The deficit. That was the primary objective of IMF, balance of payment deficit. And balance of payment deficit was happening largely in the traditional societies. Okay. And why traditional non-Western societies were going through balance of payment deficit? Because they were not productive. They had to import a lot, but they could not export anything that is productive or could yield them dollar as much as was used in the import of petroleum or any other good. And therefore it resulted in drain of wealth. But IMF and World Bank, it was a holy alliance between these two Western organization, multilateral, that took upon themselves to help the traditional societies. So far, insofar that even education program, health program, population control program, infrastructure development program, everything was aided and financed by these. Okay. Now let us come to dependency theory. डिपेंडेंसी थ्योरी हमें सिर्फ एक ही चीज बोलती है, द कॉज ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी इज नॉट देयर कल्चरल वैल्यूज. The cause of underdevelopment of the traditional society is the dependency that has been established between West and the non-West countries. It is the exploitation that is the cause of the underdevelopment of the traditional societies. It is not the lack of cultural values. देखो, this theory was a response to modernization theory. It came in 1950s and 60s. 50s and 60s. Okay. The founder was A.G. Frank. Okay. And the case study to A.G. Frank was Latin America. Okay, Latin America. He looked into the conditions of Latin America of the 50s and 60s. You know, if you see North America and South America, you see a lot of difference in terms of development. A lot of difference in terms of development. And this is also called as
global divide, north-south divide. The north is not the geographical north only. The north is also the superior north. North actually signifies or symbolizes the top one. So A.G. Frank believed that if I look into Latin America, I cannot say it is the lack of cultural values. What I can see is the exploitation of Latin America by the developed countries, because of which Latin America is poor today. It is not the cultural values of traditional society. Rather, it is the exploitation of the traditional by the developed, which is the cause of underdevelopment of the underdeveloped. Underdeveloped means traditional society. It is not the cultural values of traditional society, rather it is the exploitation of the traditional by the developed, which is the cause of underdevelopment of the underdeveloped. Okay. Now, ये कैसे हुआ? How did this happen? थोड़ा बड़ा बनाना इसको, सर्कल को. This is world, okay, and in this world there are some countries which A.G. Frank called as metropolis. मेट्रोपोलिस. मेट्रोपोलिस का मतलब क्या है? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड. ओके, developed ones. And in this world, again, other than this developed ones, that is metropolis, we have some traditional or the non-Western or the underdeveloped countries, so-called underdeveloped. And A.G. Frank calls those countries as satellites. Satellites. Satellite 1, Satellite 2, Satellite 3, Satellite 4. Satellites. Okay. A.G. Frank is saying that the
non-Western countries have become satellites of the Western country. सैटेलाइट्स का मतलब आप यहाँ समझो, सैटेलाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि इन सैटेलाइट वर्ड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे। सैटेलाइट का काम क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें सैटेलाइट से आती है, ठीक है। आज अगर सैटेलाइट ना हो तो द कम्युनिकेशन बिटवीन अस ऑल्सो वुड नॉट बी फिजिबल, रिवॉल्विंग अराउंड दी डेवलप्ड वंस। हाँ, यस, डेफिनेटली। तो सैटेलाइट जो है आज की डेट में जो है, अगर आप वैसे सैटेलाइट को समझो, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की अगर आप बात करो तो आपको पता चलेगा कि इफ सैटेलाइट इज नॉट देयर, वी वुड नॉट बी देयर। The communication between not just us, communication across the world would not be possible without satellite. टेलीफोन्स वो खत्म हो जाएंगे, बात नहीं हो पाएगी फोन पे किसी से, ठीक है। आप मीडिया जो टीवी है वो भी नहीं देख पाओगे आप विदाउट सैटेलाइट। फेसबुक नहीं चलेगा, इंटरनेट खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा विदाउट सैटेलाइट, ओके। उसी तरह the traditional societies were satellites of the developed countries. Just like today we know that satellite, वो जो हवा में वो वाली सैटेलाइट जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द सैटेलाइट, ओके। द डेटा, द सिग्नल goes two way, from here to there and from there to here, okay. So similarly, the traditional societies were satellites of the developed countries. And what were traditional societies supplying to developed or the metropolis? The traditional societies were supplying raw materials, raw material, raw material, raw material, okay. Now, what kind of raw material? See, petroleum, that is the crude oil, okay, Brent, petroleum, copper, okay, iron, spices. These were some of the prominent raw materials that were supplied by traditional societies or satellites to the metropolis. And what was happening when these things were supplied to metropolis? Metropolis processed these goods, okay, converted them into finished good. तो इन्होंने यहां से आयरन आया, उधर से क्या आया, स्टील. They gave them iron, they exported back steel. They gave them crude oil, they exported the processed petroleum, petrol, high grade petrol, okay, or even diesel. Spices, they gave them spices, and they again processed those spices. So therefore, metropolis was more like processing industry. Processing industry. Okay, yes, cotton also. Okay, cotton. Even if you remember, the world history largely for a very long time revolved around nylon, indigo.
Okay. Now, they gave them raw materials, and these supplied, the metropolis supplied them finished goods. Finished good, FG. This was happening. This is the pattern that was there. Okay. Sociologists are largely interested in patterns. Okay, the pattern was this. And what happened? They were exporting raw material and importing finished good. So obviously, these countries completely got drained of their wealth because the finished good were so expensive that the traditional societies were not able to afford, even if they were, yes, they were consuming, but then in the process of consumption their wealth was draining because they were not producing themselves anything that could be exported to the western model countries, and therefore there was an economic deficit. The trade was always inclined towards, or it weighed more in favor of the western countries. Okay. And AG Frank, when he's talking about metropolis, he's talking about US and UK. And when he's talking about satellites, he's talking about Latin America. Latin America means Peru, Venezuela, Bolivia. These are the countries. Okay, Peruvian. Now, so it is the exploitation of the traditional societies, okay, that has made them poor, not their cultural values. Rather, cultural value was a propaganda. Okay, that we have come here to civilize you. It was a propaganda. It is not the reality. This is what A.G. Frank is saying. Okay. Now, A.G. Frank believed that all this was largely the result of colonialism. Colonialism favored Western countries. Metropolis. Okay. And he believed that this colonialism actually divided the world into colonialism divided the world into high income countries and low income countries. High income countries and low income countries. Okay. And then he said that although colonialism was over, despite the end of colonialism, the relation that was there before colonialism remained the similar one. That means if I would say, during colonialism, metropolis was here, satellite was here.
I mean, hierarchy was there between these two. Okay, hierarchy, inequality, that is global inequality. But after colonialism, post colonialism, what happened? This relation that satellites are dependent on them maintained itself. There was no change. Relation never changed. What was the difference? The difference was that the metropolis was no longer metropolis. अब colonialism के बाद अब जो metropolis है, it was no longer political colonizer. Metropolis was no longer political colonizer, but it remained economic colonizer. समझे इसका मतलब? Okay, it remained economic colonizer. How it remained economic colonizer? Very simple. If you look into the relationship between India and America or India and Europe, or for that matter any traditional society that was colonized at one point of time by UK, you would see that those societies are still running in deficit. Those societies are still not autonomous. You know, आज तक हम बात करते हैं कि इंडिया में बनाएंगे, we will make in India, but you know, we do not make anything novel or innovative in India. We are still dependent for many finished goods on America, Japan, UK. जिस टेक्नोलॉजी से हम बात कर रहे हैं बाहर की, ये माइक जिस कंपनी का है, सनहाइजर, जर्मनी, ये पता नहीं कहाँ का है, मैक्स हब, देखना पड़ेगा। ये मोबाइल जिससे हम बात करते हैं, सब बाहर के। सो यू वुड सी our lifestyle revolves around the goods that are manufactured in the western countries. And west, जब मैं west बोलता हूं, west का मतलब सिर्फ geographical west नहीं है, west का मतलब होता है developed one. ये एक basically ये symbol है बोलने का। west का मतलब हमेशा developed बोला जाता है। जब हम social science में west पढ़ते हैं, west का मतलब top one, developed one. Okay. And it can also include Japan. ठीक है, although Japan is in east, but still western connotation थोड़ा वहां अलग हो जाता है। Okay. Now, this economic colonization is what we call today as globalization. And globalization is therefore nothing but neo-colonialism. It's new form of colonialism. चाइना, देखो जब ये थ्योरी बनी थी, China was not part of this theory. Okay, China was never part of metropolis. It was always seen as part of satellite, especially in 1950s when China was very much like us only. There was no difference between India and China in 1950. Today there is a lot of difference. But when this theory was formulated, in 1950s China witnessed cultural revolution. So it was going in the direction of communism, the Maoism basically, not communism, Maoist, which is a Maoist version of communism. Okay.
So at that point of time there was no difference, but today there is. But ये theory जो valid है mainly उस model के लिए है, Western versus traditional, not including China. Okay. चाइना के लिए एक अलग थ्योरी है, neo-colonialism. Now, E.G. Frank has given some solutions. Solution for what? ये जो डिपेंडेंसी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है हमारा और यूएस के बीच में, ओके, हमारा और यूके के बीच में जो डिपेंडेंसी रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, you talk about anything. For defense we are dependent on them, for technology we are dependent on them, whether it is smartphone technology, whether it is agricultural technology, we are dependent on them. Okay, for our lifestyle we are dependent on them. The shows that we see on Netflix are sponsored by those companies only. Viacom, they are the production houses. Viacom is US based. Okay, so we have become dependent on them for every need that we have. So solution क्या है? A.G. Frank believed that unless these traditional societies de-link themselves, de-linking, unless traditional societies de-link themselves, there would not be any sort of change. Okay, so imagine he is Marxist scholar, so he is talking about how proletariats can, free themselves from the bourgeois chains by delinking themselves from the bourgeoisie. And what is the meaning of delinking? Delinking means to overthrow dependency relation and become self-sufficient. ये जो वर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी, इसका आइडिया यहां से है, मार्क्सिस्ट लिटरेचर से. जब हम बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी, वैसे हम इकोनॉमी में पढ़ रहे होते हैं, वो मार्क्स का आइडिया है. कम्युनिज्म के लिए उसने वही बोला था, सेल्फ सफिशिएंसी. ओके, सेल्फ सफिशिएंट, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो. इसका मतलब क्या हुआ? आप क्या करो, आप इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो बाय इन हाउस प्रोडक्शन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विच मीन्स इन हाउस प्रोडक्शन, मतलब अपने घर में बनाओ. घर मतलब लिटरली घर नहीं, इसका मतलब अपनी कंट्री. इन हाउस प्रोडक्शन, इन हाउस प्रोडक्शन. ओके, ये किया ना, चाइना ने किया था ये. चाइना वाज आल्सो सैटेलाइट बेसिकली. चाइना हैड आल्सो प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल, मल्टीपल काइंड्स ऑफ टी का, जैसे जो था टी, चाइना भी टी देता था. सर, कैन नैम आल्सो बी एग्जांपल ऑफ डी-लिंकिंग? Yes, you can say non-aligned movement can be seen as an example of de-linking. Okay, that they are no more linked to either capitalist value or either linked to communist. But the problem is
with NAM and the idea given by A.G. Frank. A.G. Frank is largely, he's a Marxist scholar, so he would always talk about limited production, self-sufficiency. NAM, on the other hand, is an ideology, was a movement that did not even sponsor or subscribe to the idea of communism. Okay, so therefore थोड़ा सा अलग है यहाँ पर. Okay, and NAM, yes, NAM political भी था mainly. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी रहेगी रूलिंग क्लास की, इसके ऊपर नया मूवमेंट था मेनली. ओके, now we will now study another theory, that is world system. Acha, by the way, in that theory, the last one, the conclusion that we can safely draw is that development is a zero-sum game. This is the conclusion that we can draw from A.G. Frank. Zero sum. That means development is something that favors Western countries at the cost of the non-Western. ठीक है? Development is a zero-sum game. Okay. If you get a question on, if you get question something like this, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है? Suppose you get a question like this: development of underdevelopment. Something like this. Okay, आगे पीछे कुछ सेंटेंस होंगे बट मेन थीम ये है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट. ये कर लोगे? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इसका मीनिंग ये है कि द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड was created or was the result of the development of the developed, and therefore development of the developed, since development of the developed led to underdevelopment of the underdeveloped, therefore development actually led to the rise of underdevelopment, and therefore it was underdevelopment that was developing. ठीक है, it was the underdevelopment that was developing. ये है इसका मीनिंग. ओके, डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, बट किस चीज का? पावर्टी का, डेवलपमेंट ऑफ पावर्टी. देयर इज वन स्कॉलर, Ivan Illich. Ivan Illich. Ivan Illich is the same person जिसके बारे में मैंने आपको बहुत शुरुआत में कभी बात करी होगी. He is the one who calls school as an advertisement agency, जो सबसे पहला लेक्चर जो मैंने दिया था. This man argues that development
is a planned poverty. Development is a planned poverty. I mean, when you talk about development, always what comes to our mind? Economic growth. So you plan economic growth. That is what you say. You are having development policy, something like that, to have economic growth. But you do not plan only economic growth. Unconsciously, what you are also planning is the poverty of the other country, at the cost of which you are going to become developed. And therefore, development is a planned poverty. Any country you see today, you would say the Britain is Britain today, UK is UK today only because of the colonization. Okay. The wealth that it had appropriated from all the colonies had resulted into the rise of what we today call as Western institutions and Western hegemony. Okay. So when you read modernization theory, you study the world from the perspective of those whites. Okay. Imagine when I'm teaching you modernization theory, imagine that I am Britisher and you are Indian. Modernization theory is that theory which actually helped me to justify what I'm going to do with you. And this development theory, dependency theory, when you study the world from this perspective, you do not see the world from the perspective of whites. You now see the world from the perspective of colonized. And both are equally valid. सही बात है कि नहीं? Both are equally valid. Now, so development of underdevelopment आएगा क्वेश्चन, आपको क्या लिखना है? A.G. Frank. Okay. Now, there is one more scholar that I would like to talk about, that is who has given this theory, world system theory. World system theory. It is given by Immanuel Wallerstein. Immanuel Wallerstein. ठीक है. इमैनुअल वॉलस्टीन क्या बोलता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो वो कुछ ऐसा बोल रहा है. बाय द वे, ही इज ऑल्सो मार्क्सिस्ट. ये भी मार्क्सिस्ट है. ओके. जस्ट लाइक एजी फ्रैंक, ही इज ऑल्सो मार्क्सिस्ट, बट ही इज कंटेम्पररी. कंटेम्पररी मतलब ऑल्दो इसकी भी डेथ हो गई है, अभी रिसेंटली मरा ये, लेकिन इसने थोड़ा कंटेम्पररी है. आई मीन व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट, चलो मैं पहले थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं. According to him, the world is divided. Definitely, it is divided, but like this. Just make 3 concentric circles. You know, when you go to any city, the most affluent locations, most posh locations would be at the
सेंटर ऑफ द सिटी। आप किसी भी सिटी में जाओगे ना, जो सिटी का सेंटर है वो सबसे पॉश होता है, सबसे पॉश, ठीक है। और वो सेंटर बाकी कोनों से बहुत दूर होता है, काफी एक डिस्टेंस होता है सेंटर और बाकी कोनों में। जैसे दिल्ली में यू सी वी हैव सेंट्रल दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली इज द मोस्ट elite one. चाणक्यपुरी, एम्बेसी एरिया, लटियंस, सेंट्रल दिल्ली में ही आता है, वो चाणक्यपुरी का ही पार्ट है। ओके, तो उसी तरह जो वर्ल्ड का जो सबसे सेंटर पॉइंट होएगा, उधर भी सबसे एफ्लुएंट सोसाइटीज और डेवलप्ड सोसाइटीज वहां सिचुएटेड होंगी। एंड ही वॉलस्टीन बिलीव दैट द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ 3 groups. One is core, second is periphery, this is the third one, periphery, and the second one is semi periphery. These are the 3 distinctions: core, periphery, semi periphery. ठीक है। now we'll see what is the meaning of these 3. Core, core countries, write down, consist of technologically and economically advanced countries. टेक्नोलॉजिकली, एक और चीज लिख लो, टेक्नोलॉजिकली, मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, तीनों में सबसे सुप्रीम जो है दैट इज कोर। ओके, that is the core. And what do these core countries do? These core countries exploit, these core countries exploit poor countries. How? By cheap imports. उनसे बहुत सस्ते में लेते हैं सब कुछ और इनके यहां बहुत महंगे में बेचते हैं। ओके, चीप इंपोर्ट्स। Okay, so what will they do, these core countries? Now remember, when Wallerstein is talking about core country, he is largely referring to US, Germany, France, UK, the 4 countries. Okay, exploit poor countries. Okay, so write down one point: core countries exploit peripheral countries.
peripheral. Core countries exploit peripheral countries. Peripheral मतलब जो सबसे लास्ट में है, peripheral. Exploit peripheral countries for its cheap labor, agricultural products, and raw materials. And they monopolize production of manufactured goods. And they monopolize production of manufactured goods. Which creates unequal status between core and peripheral. Okay, core and peripheral. Now, what is peripheral? When he talks about periphery, he is largely referring to Central African republics and Asia. Africa and Asia, ऐसे समझो आप, Asia and Africa, that is the periphery. Periphery. And what does periphery do? Exactly what A.G. Frank said. Periphery provides cheap raw material to these people. ठीक है. So periphery provides cheap raw materials. अच्छा, रॉ मटेरियल का मतलब क्या है? Tell me, is labor power raw material? Yes. Labor power is also raw material. So if you today see many Indians in America working in Silicon Valley, why they are working? Because they are seen as cheap labor in America. Okay. That is why this is the only reason why you don't find many Americans in those jobs. That can be done by Asians. Because those jobs are the ones which can be outsourced to ensure that companies do not run into deficit. And therefore, the white collar, the Indian or the Asian white collar serves as raw material to the Western countries. Okay. So provides cheap material, raw material, including labor power. Okay. To core. ठीक है. इसका मतलब पेरिफेरी की एग्जिस्टेंस क्या है? कोर को हेल्प करने में, ये एग्जिस्टेंस है पेरिफेरी की. लाइक सैटेलाइट, जैसा कि एजी फ्रैंक बोलता था, ही इज आल्सो मार्क्सिस्ट लाइक एजी फ्रैंक, सो उसी लाइंस पे बोल रहे हैं. ओके. द एग्जिस्टेंस ऑफ पेरिफेरी, द फंक्शन ऑफ पेरिफेरी is to ensure the productivity of the core, so that core expands more and more.
The idea is that what would happen eventually, core would expand, keep on expanding, keep on expanding, keep on expanding, and periphery, semi-periphery would keep on contracting, 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 and gradually what you see today as core, semi-periphery, periphery, eventually what would happen? You would see only core. Periphery and periphery would be submerged. What we today call as homogenization, अमेरिकनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है, कि हम सब वैसे बन जाएंगे, वैसा सोचने लग जाएंगे, वही गुड्स कंज्यूम करेंगे, वो सब चीजें, ठीक है। बट काफी हाइपोथेटिकल सा लगता है, हाँ हाइपोथेटिकल थोड़ा सा है, बट जब हम देखते हैं वर्ल्ड को आज की डेट में, तो ये थ्योरी काफी एनलाइटन करती है हमें ये समझाने में। इफ यू सी एनी अग्रीमेंट between countries like India, Japan, India, US, there was a point of time when India did not have bargaining power. India did not have bargaining power and was completely dependent on America or UK for finished goods, production houses, manufacturing units, service sector, for many things. But today, you would see that many Asian countries have gone to another level. Now they have bargaining power as well. India and China have become, the 21st century, just like Chinese premier and India's prime minister, they believe that 21st century belongs to India and China. And the kind of innovation that is happening now in India, you would see that our Indian government promotes and encourage lot of startup, innovative, entrepreneurial spirit, and lot of entrepreneurial units. Stand Up India, Startup India, provide loans, assistance to many people who want to become entrepreneur. So you see that today India has developed a bargaining power, and therefore when you see any sort of import or any sort of agreement between India and US, you would always also see that India would put certain clause in those agreements that 20% of that good has to be outsourced from the local. Okay, this was a point of time when this was happening till 2010 or even 14, 15, that India used to put certain conditions on the clause that raw materials for this thing would be outsourced or would be procured from our local people. And the reason why India did not become member of Regional Comprehensive Economic Partnership, because it believed that it may not be profitable or it may turn out to be a huge loss for the farmers. Because if India becomes member of RCEP, India would be subservient to the agreement, which runs largely in the favor of developed ones. And Indian farmers and agricultural laborers would lose their jobs or source of income. And that is why India did not become member of RCEP. And you also see today we talk a lot about vocal for local, make in India, manufacturing hub बनाएंगे इसको, skill create करेंगे, skill India. All these things are happening now. So India is on the way to become developed indigenously. Okay, but it will take a long time for India to do that, or for any Asian country to do that, because colonialism was there for more than 200 years. Okay. But anyhow,
What I was trying to tell you is that periphery is something that provides raw material, including labor power, to the core. Now the question is, what does semi-periphery do? Semi-periphery actually shares characteristics of both core and periphery. So that way, it was very much influenced by the idea of Eric Olin Wright's contradictory class location. There are some countries that share the features of both core and periphery. Okay, just like managerial class share the feature of both bourgeoisie and the working class in the language of Wright. Similarly, according to Wallerstein, write down shares features of both core and peripheral countries. They benefit from unequal trade with periphery. They benefit from unequal trade with periphery. But they are at disadvantage with regard to trade with the core. Trade with the core. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेमी पेरिफेरी है ये वो लोग हैं जो दे एक्ट लाइक कोर with peripheral, but they themselves are peripheral to this core. Okay, so the relation between core and periphery is exactly what the relation between semi-periphery and the periphery is. So periphery is exploited from both the sides. Okay, but semi-periphery becomes periphery to the core, although it is like core to the peripheral. Now the countries which are there in the semi-peripheral are Russia, China, and today you can say even India. So India was at one point of time here. Today you can say कि India यहाँ आ गया सेमी पेरिफेरी में. Okay. And Immanuel Wallerstein also explains that whenever peripheral tries to become semi-periphery, semi-periphery will resist it. Whenever semi-periphery would try to become like core, core would resist it. देखो जब चाइना यूएस को ऊपर करने जा रहा था, यूएस को पार करने जा रहा था, when China was going to supersede US, what did US do? US imposed दुनिया भर के सैंक्शन, कट ऑफ कर लिया वहां से. बट वी नो दैट वो भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि चाइना होल्ड्स मैक्सिमम रिजर्व अमेरिकन डॉलर्स. बट यू वुड सी यूएस not having very good relations with China, and it would also present China as a country that does not run on market principle, or a country with which you cannot have any democratic engagement, a country that lacks political democracy. So when you see American president, and this is something that happened over the last 5 years mainly, ज़्यादा frequently last 5 साल में हुआ when Trump was there, because
China was going to supersede. Gradually, it is going to. Okay. And therefore, when semi-peripheral tries to become core, core would resist. Core would try to put sanctions. In World Trade Organization, there is a concept called as barriers to trade. Tariff barrier, non-tariff barrier. Okay. We impose barriers, tariff and non-tariff. Now, tariff barrier would be quantitative in the sense how much of quota are you going to import? That would be tariff barrier. Accordingly, the tax would be imposed. But non-tariff barrier is largely based on qualitative principles. Qualitative. So that good may be discarded, boycotted. ओके जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंडिया से कभी मैंगो जाते हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं साइको व्हाट दे कॉल इट एज फाइटोसैनिटरी मेजर्स, अंडर फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ओके, तो कुछ ऐसा आएगा कि भाई आपका जो गुड्स है वो हेल्थ के लिए हमारे अच्छा नहीं है, उसमें फैट ज्यादा है, समथिंग लाइक दिस। So that is phytosanitary measure. So this is non-tariff barrier. So you see these barriers are largely imposed by developed countries on the underdeveloped. It is a mode of maintaining the status quo. Tariff and non-tariff barrier, if you look into tariff and non-tariff barrier sociologically, you see these are weapons used by the developed ones to maintain the social system as it is. Social system where the underdeveloped are hierarchically lowerly placed in comparison to the developed. So you see a boundary is maintained only because of these barriers between the developed and the underdeveloped. It is a method to maintain exclusion. Phytosanitary, yes, phytosanitary measures. Now, what does finally we have to understand? What do we finally have to understand? That both dependency and world system theory are Marxist theory, and both are talking about development of one at the cost of another. Okay, so A.G. Frank would talk about metropolis developing at the cost of satellite. Wallerstein would talk about core developing at the cost of periphery or semi-periphery. Periphery or semi-periphery. Okay, this is the main difference between these two theories. Idea same है दोनों का, but when it comes to, remember, if the question is on colonialism, then you can write A.G. Frank. But if the question is general, globalization, just globalization, not colonialism per se, if the question is on contemporary times, you will write Emanuel Wallerstein. Okay, because contemporary times is not that of colonialism. It may be neo-colonialism, that is different thing, but it is not colonialism. Okay. Now the last thing that we are going to do is critique. Critique of dependency. Critique of dependency theory. अब करते हैं शुरू. Critique of dependency theory. Remember, when we read dependency theory,
Dependency theory told us that colonialism is exploitative. See, what could be the logical critique to this point? Logical critique. That colonialism did not only exploit, it also benefited. You know, I'll tell you one example. India has benefited a lot only because of colonialism. We, in the social sciences, if it was so simple to say that colonialism exploited and drained all the resources, if that was so easy, there would not have been people coming out with different opinions as to how India also benefited from colonialism. The whole idea of modernization, introduction of railways, idea of modern education, all these things are given to us by colonials that today we celebrate, okay, and take for granted. And there are many countries which were not colonized, and they are poorer. The most poorest of those countries are those which were never colonized by Britain. For example, Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia is poor, very poor country. In many African countries, you see, there are many of those countries which were never colonized. They are poorest today. And to say that colonialism exploits or creates underdevelopment would be wrong. The other idea is that colonialism has benefited India and the countries which were never exploited, which were never colonized, are some of the poorest ones. Some of the poorest ones. For example, Ethiopia. Okay. This is first critique of dependency theory. Second critique, को लिख लो पहले. Secondly, देखो, dependency theory blames the developed countries only and only. Logical criticism. It blames only developed countries for the poor conditions of the underdeveloped. That means it blames or it looks only for external causes. It looks only for external causes. And ignores the internal causes. Internal causes for the underdevelopment. What are those internal causes? When you look into ethnic and communal conflict within India,
You may blame those people who started this, but they have gone now. अब वो चले गए. So what we are doing today is something that we should be blamed for, not them. And that also is to a very large extent one of the internal cause for the underdevelopment of the country, because development is not only about, which is something that I'll tell you, is not only about economic growth. Development is not only about economic capital, it is equally about human capital. Okay. If you look into the underdeveloped countries, you would see the internal factors which have made them underdeveloped are racial and ethnic or caste based conflict, gender inequality, corruption, and there are some countries which are landlocked. Geographical factors also. Being landlocked, they could not develop because landlocked position prevent them from having access to resources that are generally found underwater. लैंडलॉक्ड पोजीशन. देखो इंडिया में अगर आप देखोगे ना, सबसे डेवलप्ड कंट्री, सबसे डेवलप्ड स्टेट और अंडर डेवलप्ड स्टेट, आपको पता चलेगा वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड आर दोज विच आर लैंडलॉक्ड. स्पिरिट ऑफ रिलीजन, हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी हम बोलेंगे. ठीक है. जैसे देखो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, दीज आर लैंडलॉक्ड. यूपी लैंडलॉक्ड, बिहार लैंडलॉक्ड. वहीं आप देखोगे मुंबई, मतलब महाराष्ट्र, बेसिकली खासकर वेस्टर्न महाराष्ट्र. वेस्टर्न महाराष्ट्र इज डेवलप्ड, ईस्टर्न महाराष्ट्र इज नॉट. क्यों? क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है. ईस्टर्न महाराष्ट्र में क्राइसिस रहता है. ठीक है. उड़ीसा जो है, उड़ीसा में भी अगर आप देखोगे ना, उड़ीसा का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है. वो तो साइक्लोन, वो जो डिजास्टर है उसकी वजह से उसका प्रॉब्लम है. अदरवाइज अगर कोई स्टेट लैंडलॉक ना हो और साइक्लोनिक कंडीशंस ना हो वहां पे, तो डेवलप्ड है. ठीक है. उड़ीसा का एक अलग एक्सेप्शन है. Racial, ethnic, caste-based conflict, gender inequality, corruption. These are also the factors that should be blamed for the underdevelopment of the underdeveloped countries. Okay. Third, third factor. You know, when we look into dependency theory, it tells us the solution which were given by A.G. Frank were something like delinking. You delink yourself, you import, you substitute import, you become self-reliant, self-sufficient. A.G. Frank also gave one more solution. You can note down in that page only. Where I talked about solution given by A.G. Frank, there you can write down one more solution: socialist revolution. That is also one solution that was given by A.G. Frank. Socialist revolution that happened in China, Cuba. Socialist revolution. Okay. Now, but when you look into the critique, you would see that these solutions like import substitution, self-sufficiency, socialist revolution,
these solutions have miserably failed, have miserably failed. ये फेल हुए हैं सब के सब. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हुआ, तभी तो बीओपी डेफिसिट आया. इंडिया ने बहुत ट्राई किया था सेल्फ सफिशिएंट होने का, बट नहीं हो पाया और उल्टा डेफिसिट आ गया, बीओपी डेफिसिट. बीओपी डेफिसिट. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन ने किया क्या है? It has actually led to genocide, mass killings. Because socialist revolution gives rise to totalitarianism. A totalitarian leader emerge who somehow convince people that give all the power to me, I will distribute the wealth. And the same thing reproduces. He does not distribute the wealth. Poverty reproduces. Okay. Fourthly, which is also important critique, that this theory, dependency theory, has actually portrayed all the satellites as one, as if there is no difference between satellites. A.G. Frank has actually portrayed all the least developed countries as similar. Portrayed all the LIC, that is low income countries or least developed countries, as one and the same. That can also not be the right method. That should also not be the right way to look at the relationship. Okay. So these are some of the most important critique of the development thesis, a dependency theory. Now, what I'll deal with now is some important concept, okay, including development and globalization. Okay, this you can use even in your essay. essay में भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है. जीएस में भी आप यूज कर सकते हो कुछ हद तक. Development. Now the question is, what is development? That is the next part of your unit. What do we understand by the meaning of development? इसका मीनिंग होता क्या है? For a very long time, economic growth was equated with development. काफी टाइम तक यही चल रहा था कि growth is equal to development. Okay. In fact, till 90s, GDP and GNP was the measure of development. Gross domestic product, gross national product were the, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है प्रणव, बिल्कुल सही पॉइंट बोला प्रणव तुमने. वो इसके आगे आएगा कि कैसे डेवलपमेंट का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है. और अमर्त्य सेन के बाद भी फिर कुछ लोग और हैं, पर पहले हम ये समझ लेते हैं कि टिल 90s इट वाज जीडीपी एंड जीएनपी दैट वाज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट वाज नथिंग बट मटीरियल. मटीरियल प्रोग्रेस को हम डेवलपमेंट समझते थे.
Therefore, it was materialist approach that the world followed for a very long time to understand the meaning of development. Materialist approach, or you can say it was materiality that was given focus or emphasis, okay, more than any other factor. Materiality, okay. But we know there are many countries which are high in GDP but low in HDI. मटेरियल तो डेवलप हो गया, ह्यूमन नहीं डेवलप हुआ. ठीक है, मटेरियल डेवलप हो गया, ह्यूमन डेवलप नहीं हुआ. तो क्या डेवलपमेंट इसको बोल देंगे हम? नहीं बोल पाएंगे. तो डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ मॉल खड़ा करना, मॉडर्न स्कूल्स खड़ा करना, हाईवे बनाना, मेट्रो करना, ये सब डेवलपमेंट नहीं होता. ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट की, और ये अंडरस्टैंडिंग हाईली कैपिटलिस्ट अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट की. ओके, when you see any change in economy, when you see the growth of economic base, that you call as development, that is wrong. The other aspects of society should also be developed, only then we say society is developed. If you see only economic base developed, that is not what development is. Okay. Now, this was there for a very long time as one of the fundamental principle. Till date, in fact, आज तक की डेट में जीडीपी ही डोमिनेट करता है. बस आगे हम क्या करते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी ये लगा देते हैं, ट्रिपल पी. हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो जीएस में हम पढ़ते हैं आज की डेट में कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग है. ग्रोथ का मतलब होता है इकोनॉमिक, और डेवलपमेंट ये है अब जो कि नॉन इकोनॉमिक है, मटेरियल, और क्या नॉन मटेरियल, दैट इज ह्यूमन. बट उससे पहले यही होता था कि ग्रोथ वाज इक्वल टू डेवलपमेंट. टिल 90s ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग एक ही होता था. 90s के बाद चेंज हुआ, तभी ये डिबेट इकोनॉमिक्स में आया कि इसको ग्रोथ बोलते हैं, इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते. ठीक है. So till 90s development was equal to economic growth. That was to be measured by GDP, GNP. Okay. But what happened after this? Post 90s, we now had different indices coming up, different people coming up, establishing a new kind of discourse on development, talking about how development should be measured, in what terms development should be measured. And therefore, post 90s, you would see many people started talking about HDI, that is Human Development Index. Post 2000, people started talking about GNH, gross national happiness. This is what development is. भाई अगर आपके पास पैसा है, आप केपेबल हो, एजुकेटेड हो, सिविल सोसाइटी के मेंबर हो, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो आखिर में इतना सब करने के बाद भी, तो आप डेवलप्ड किस बात के? दूसरी तरफ एक आदमी है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई पावर नहीं है, स्टेटस नहीं है, बट खुश बहुत है.
डेवलपमेंट तो उसकी हुई। ये एक नजरिया है जिसकी कमी थी दुनिया में बहुत टाइम तक, और ये आइडिया जो आया है हैप्पीनेस का, ये आया है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स भी जो होता है, जैसे हम इकोनॉमिक्स जनरली पढ़ते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, बस मैक्रो माइक्रो हम ऐसे पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के कई ब्रांचेस हैं, उसमें एक ब्रांच है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि बुद्धा के प्रिंसिपल से बनी है, जो भूटान से इंस्पायर्ड है बिल्कुल, क्योंकि भूटानीज इकोनॉमी जो है दैट इज बुद्धिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, भूटानीज इकोनॉमी इज बुद्धिस्ट इकोनॉमी। एंड वहां पे डेवलपमेंट का मीनिंग हैप्पीनेस है। इसलिए आप देखोगे भूटान, अगर आप कभी जाओगे तो आपको ग्रीनरी बहुत दिखेगी वहां पे, ग्रीनरी बहुत है, हिल्स हैं बड़े बड़े, इन्वायरमेंट को कंजर्व करके रखा है उन्होंने आज की डेट तक। एंड यू वुड ऑल्सो सी, जैसे यहाँ इंडिया में या फिर कहीं आप बाहर जाओ तो वहां पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट एक होता है जैसे बायोडाइवर्सिटी, जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ऐसा हम कुछ पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, हम ये पढ़ते हैं। एंड यू वुड सी that we have limited biosphere reserves and protected or reserved forest, but in Bhutan 70% of the geography is protected forest, 70% is protected, 30% में जो चलता है मटेरियल, जो भी इकोनॉमी है वो भी बहुत लिमिटेड नीड्स पे बेस्ड है। भूटान डज नॉट हैव एम्बिशन टू बिकम लाइक यूएसए, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और ही है। मैकडोनल्ड और नाइकी ये सब नहीं है डेवलपमेंट उसके लिए मीनिंग। लेटेस्ट में इंडिया का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी डिनाई किया उसने इसी बेसिस पे, बिल्कुल सेम रीजन, क्योंकि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन वहां पे बहुत जोर देते हैं वो। एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर वुड बी एस्टैब्लिश एट द कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन भूटान कभी नहीं होने देगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वो उसका 70%। ओके, सो यू सी दैट the idea of development has actually changed over a long period of time. What you considered as development in 1900 is different from what we consider development today in 2021. So development is not so objective in reality. It depends on what you take of it. So today you see many people talking about things like green GDP. करते हैं कि नहीं? हम करते हैं। जीडीपी भी सिर्फ जीडीपी नहीं रह गया है, ग्रीन जीडीपी कितना है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कितना है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस। हाँ, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। और इसी के साथ 2000 में ही आई विल ऐड वन मोर पॉइंट दैट वाज देयर, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। From 2000 to 2015, it was still 2015, and now post 2015 we have Sustainable Development Goal, SDG, 2015 to 2030। और इस पूरे रास्ते में हमने एक चीज देखी, हमने समझी कि डेवलपमेंट का मीनिंग इवॉल्व होते जा रहा है। तो सिर्फ डेवलपमेंट का एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि व्हाट अमाउंट्स टू बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट, उस आइडिया में भी एवोल्यूशन हो रहा है। तो यू सी नॉट ओनली एवोल्यूशन और ग्रोथ of development, what we used to see initially was nothing but development of growth. Today what we see is growth of development.
अब हम ग्रोथ देखते हैं डेवलपमेंट का। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डेवलपमेंट का, ग्रोथ का मीनिंग है डेवलपमेंट के आइडिया में जो ग्रोथ हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट इज नो लॉन्गर मटीरियलिस्ट इन नेचर। ओके, so this is one thing that you should remember. What we can see here is nothing but an ever changing or ever evolving discourse of development. The discourse of development has evolved. The way you speak, discourse का मतलब होता है the way you speak. The way you speak about development today is very different from the way you would have spoken about development in 1900s. Okay. To speak about development in those material terms was right and contextually relevant, because that was the time when countries were in need of restoring their economic conditions, especially after having gone through world wars, after having suffered economic losses. It was inevitable on the part of countries to speak in terms of material when they're talking about development. But today, you don't speak only materially, you speak ideally as well. So the idea of development was material, today it is ideal. And therefore, what you see is nothing but this was ideology. And this is still, to a very large extent, an ideology as well. But this is what the utopia is. This has become a reference point for us, a vision for us. The development of human is a vision for us. It is not something that we have achieved. We are working on it every day. And therefore it is utopia. Utopia does not mean कि वो कभी होएगा नहीं. Utopia provides us opportunity to gauge our position, to look back into ourselves and to understand and to reassess ourselves in the contemporary times, so that we could bring in certain modification and try to achieve that position that is brought to us by the utopia. So therefore, now I would talk about three perspectives. Mainstream perspective of development. And then we understand the alternative perspective to development. एक काम करो, टेबल बना लो, एक टेबल बना लो, टेबल बनाते हैं, टेबल से आसान हो जाएगा.
When you talk about growth, growth is only economic. Okay. So here I would be talking, in this box, I would be talking about the mainstream, which was the mainstream perspective of डेवलपमेंट. ये मेन स्ट्रीम था एक टाइम पे, ग्रोथ को डेवलपमेंट से इक्वेट करना वाज मेन स्ट्रीम. ओके. ऑब्जेक्टिव क्या था इस मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट का? अक्यूमुलेशन. अक्यूमुलेशन मींस accumulate wealth as much as possible, क्योंकि GDP is the indicator of development and GDP runs on wealth. How much wealth have you produced in terms of goods and services? तो wealth accumulate करने का मतलब डेवलपमेंट होता था. ठीक है, आज भी है, बट आइडियाज अब चेंज हो रहे हैं. ठीक है. एंड इसका मीनिंग क्या था? दिस वाज ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव टू डेवलपमेंट. ऑल्टरनेटिव का मीनिंग होता है मेन स्ट्रीम से हटकर ऑल्टरनेटिव, कि थोड़ा उस तरफ से देखो अब डेवलपमेंट को. डेवलपमेंट शुड नॉट बी अबाउट ग्रोथ. ऑल्टरनेटिव टेल्स अस इट शुड बी अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. अब इसलिए अक्यूमुलेशन नहीं, इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट. सर ये थोड़ा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जैसा है ना, जब मटेरियल नीड्स पूरी होगी तब बाकी दिमाग चलेगा आइडियाज में इंसान. नहीं नहीं नहीं, कौन सा ये वाला ऑल्टरनेटिव जो है? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा अलग है, ऐसा नहीं है. डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब है, अगर आप डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के आइडिया से देखोगे डेवलपमेंट को, तो उसका ये मतलब है कि इकोनॉमिक बेस अगर आपका डेवलप हो रहा है तो आपके लॉज, आपकी एजुकेशन वो उसी लेवल की बनेगी जो कि एग्जैक्टली उन्हीं को फेवर करेगी जो इकोनॉमिक बेस में है. इसका मतलब उन्हीं के आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट को फेवर करेगी. एजुकेशन भी ऐसी बनाई जाएगी जहाँ पे आप देखोगे आज की डेट में जब एनसीईआरटीज को अगर आप पढ़ते हो, एनसीईआरटीज में अब इन्वायरमेंट के ऊपर चैप्टर्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चैप्टर्स हैं, बट एक टाइम था एनसीईआरटी में चैप्टर इन सब के ऊपर नहीं होते थे. एनसीईआरटी में चैप्टर होते थे किस चीज के? डैम के कंस्ट्रक्शन के, हाईवेज के. जिस डेवलपमेंट ऐसे चैप्टर होता था डेवलपमेंट, और उसमें इमेजेस बनी होती थी हाईवे, मॉल, शॉपिंग मॉल, कंज्यूमरिज्म, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, उसको डेवलपमेंट बोलते थे. ठीक है, वेस्टर्न क्लोथ एंड वेस्टर्न वे ऑफ स्पीकिंग, दैट वाज डेवलपमेंट. और ऐसे उसमें मुन्ना मुन्नी बनाते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे है ये. बट अब वो चैप्टर्स हट गए हैं. कई बार एनसीईआरटी मॉडिफाई होगी, अब इन्वायरमेंट का चैप्टर उसमें आ गया. डेवलपमेंट इस कॉस्ट पे अगर डेवलपमेंट हो रही तो वो डेवलपमेंट नहीं है. हाँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज भी आया, ईवीएस आया. ठीक है. अब कैपेसिटेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग. आप इंसान की कैपेबिलिटी पे अप्रोच, कैपेबिलिटी को इन्हांस करो. देखो मैं आपको सिंपल आइडिया बताता हूं. देखो प्रॉब्लम क्या होती है. सपोज यहां पे एक स्कूल खुल जाए, एक नया स्कूल खुल जाए यहां पर, अभी अभी खुल गया. अगर आप सिर्फ ये देखो स्कूल खुला है तो आप बोलोगे डेवलपमेंट हो गया. स्कूल खुल गए, डेवलपमेंट हो गया. लेकिन अगर अगर उस स्कूल के अंदर बच्चे 10th क्लास तक पहुंचने के बाद भी ठीक से लिख नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, तो क्या डेवलपमेंट हुआ? नहीं हुआ. इसका मतलब कि सरफेस लेवल पे आपको दिख रहा है डेवलपमेंट हो गया, भाई स्कूल खुल गए. लेकिन द स्टूडेंट हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम क्लास 12th ही इज नॉट एबल टू राइट और स्पीक फ्लुएंटली एंड एफिशिएंटली. दैट मींस
एजुकेशन तो बढ़ गया ओनली इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, लिटरेसी नहीं बढ़ी। और एजुकेशन भी आप तब बोलते हो, एजुकेशन के मीनिंग भी बहुत है, ठीक है, ये बहुत लंबा डिबेट है इसके ऊपर, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। आई मीन if you, after studying for a long time, if you still practice inequality at the level of race or caste, if you still discriminate people, you are not educated that way. तो ये भी एक पार्ट होता है एजुकेशन का। ओके, हाँ, इट्स लाइक यस, ब्यूटी पार्लर रिफॉर्म्स टाइप। ओके, ऊपर ऊपर से मेकअप कर दिया है, ठीक है। So this is growth and social transformation. Now next, resources. यहां पे क्या है? कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये रिसोर्सेज हैं इस मॉडल में। इकोनॉमिक ग्रोथ वाले मॉडल में ये रिसोर्सेज होते हैं, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहां रिसोर्स क्या होता है? यहां होता है ह्यूमन स्किल्स, लोकल रिसोर्सेज, नॉट फॉरेन रिसोर्सेज, सोशल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। एंड नॉलेज भी मॉडर्न नहीं, नॉलेज भी लोकल होगी, लोकल नॉलेज। दिस इज द रिसोर्स, ह्यूमन स्किल्स, लोकल रिसोर्सेज, सोशल एंड ह्यूमन कैपिटल, लोकल नॉलेज, ये रिसोर्स है यहाँ का। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, पूरा ये कंप्लीट कर देता हूँ एक बार टेबल, फिर आई विल गिव यू एग्जांपल्स। ये टेबल से आपको क्लियर रहेगा। एजेंसी, एजेंसी का मतलब है वो कौन है जो ये ग्रोथ करवा रहा है, और वो कौन है जो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, ठीक है। एजेंसी जनरली जो होती है ग्रोथ लेड में, मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट में, दैट इज हाईली market led and even state led if state is capitalist. Market led and state led, that is the agency. यहां कौन एजेंसी है? यहां है कम्युनिटी, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, लोकल गवर्नमेंट, ये एजेंसी। नाउ लास्ट पॉइंट, in fact 2 more points only. मेथड, यहां क्या मेथड यूज होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इनोवेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो यहां क्या मेथड यूज होता है? पार्टिसिपेशन, माइक्रो क्रेडिट, सस्टेनेबिलिटी,
डेमोक्रेटाइजेशन, बहुत फर्क है दोनों में. एंड द लास्ट डिफरेंस, इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. यहां पे इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? जीडीपी, जीएनपी. यहां इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ग्रीन जीडीपी, एसडीजी, एचडीआई, जीएनएच. समझ गए? तो ऐसे डेवलपमेंट का जो डिस्कोर्स है वो चेंज हो गया है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं. देखो, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द things that we do in the name of development are done by taking into consideration participation of the people. People participate in the development today. For example, when you talk about conservation of environment, you cannot conserve environment without taking people into consideration. There are many national parks where the tribal population leads the conservation process. जैसे गुजरात है, एमपी है, वहां पे आप देखोगे वहां पे ट्राइबल लोग मिलकर कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को, और स्टेट उनको हेल्प करती है, क्योंकि बिकॉज स्टेट बिलीव्स दीज आर द पीपल हु नो एवरीथिंग अबाउट दीज एनिमल्स. दे हैव local knowledge which state do not possess, since state does not have any ground knowledge on those things. And then therefore we talk about people's biodiversity register, PBR, people's biodiversity register. That is also one of the component of Biodiversity Act 2002. पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, यानी कि लोग बताएंगे. जो कम्युनिटी होती, कम्युनिटी ड्रिवन जो वर्क होते हैं जितने भी, वहां पे क्या होता है, लोग अपने लेवल पे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं और अपने लेवल पे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे कोई स्पीशीज हो, और उसको कंजर्व कैसे किया उसकी नॉलेज वो स्टेट को भी देते हैं. आप देखोगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट लाइक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. So that is there only with the help of people's participation in the management of forest. Joint forest management. You talk about Panchayati Raj institution, that is local self-governance. क्या है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन. यस बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में, और वो बहुत बड़ा एग्जांपल है इस चीज का कि हम कैसे उस तरफ जा रहे हैं. बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन has talked about development of cooperatives. Cooperatives क्या होता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. आप ये समझ लो कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसा ही कुछ होता है. कोऑपरेटिव बेसिकली क्या होते हैं कि लोग आपस में अपना एंटरप्राइज खोलते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में शेयर करते हैं उसको. ठीक है, तो कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप है जैसे एसएचजी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, खुद ही बैंक बने हुए हैं, ठीक है, खुद ही लोन असिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. या फिर सेवा हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन. ठीक है, तो यू वुड सी दैट व्हेन पीपल पार्टिसिपेट एंड द डेवलपमेंट इज पीपल सेंट्रिक, दैट एक्चुअली इज मोर बेनिफिशियल in terms of sustainability and also in terms of human capital,
because you build capacity of those people in the whole process, and you use that knowledge, the local knowledge. ओके, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट स्कीम हो गई, सस्टेनेबल, वो सब जो भी है, ये है एक डिफरेंस है एक मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव का और एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव का ऑफ डेवलपमेंट। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट, ये यहाँ पे आप अमर्त्य सेन का जो आइडिया था कैपेबिलिटी अप्रोच, उसको आप यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट के। और जो कैपेबिलिटी अप्रोच है दैट इज मोर अबाउट पीपल्स नीड, human need. It is not top down approach, it is bottom up approach. So development at one point of time was top down. Today development is bottom up. Mainly the direction, the tendency is towards bottom up. People's participation has become important in the development process, and this is what we call as ethno development. The scholar who has used this term is Hetne. आप बस इतना ही लिख दोगे, इतना ही बहुत है, ये भी बहुत ज्यादा ही, लेकिन इतना भी अगर आपने लिख दिया बहुत है। अगर आपको क्वेश्चन आता है डेवलपमेंट एज एन आइडिया इज एवर इवॉल्विंग और इज नॉट यूनिवर्सल और इज नॉट ऑब्जेक्टिव, आपको पूरा ये बताना है कैसे वो इवॉल्व हुआ, चेंज क्या क्या है, ठीक है। नाउ लास्ट टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद बस एक और टॉपिक है, ठीक है, 6 बजे तक क्लास है जैसा हमें मालूम ही है। ग्लोबलाइजेशन, मैं ब्रेक ले लेता हूं फिर पहले, इससे पहले मैं कुछ बोलूं, 5 minutes break we'll have. Have you guys read globalization in GS1? Not too much. ठीक है, चलो फिर मैं जीएस के हिसाब से भी बता दूंगा आपको आज, ठीक है, जीएस में जितना काम आएगा वो भी आपको बता दूंगा मैं। तो शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम लेते हैं, सारे एस्पेक्ट इसके कवर करूंगा, आई ट्राई माय बेस्ट टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो पहले ये चीज समझो तुम कि यू नो जो 10 days ऑफ जो मैंने बोला तुम लोगों को, ये मैंने इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मुझे गोवा में जाना है, छतरी के नीचे बैठना है और एक छतरी वाली ड्रिंक पीनी है। ये 10 days का जो आइडिया है ये तुम ही लोगों से आया है मुझे, ठीक है। स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोला कि सर कुछ ऑफ दे दो हमें, हमने प्रीलिम्स के लिए अपीयर करना है, एंड वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दी लाइव लेक्चर्स, एंड देयर रिक्वेस्ट इज जेन्युइन। ये होता है, मुझे पता है कि कैसे लोगों के कोर्स छूटते हैं यहाँ पर। शुरुआत में आते हैं जोश में, बहुत जोश में, ठीक है, और ग्रेजुअली they lose their time, they start losing their time because they are not able to then watch the lectures. Miss हो जाते हैं because there are many things which are clashing with each other. Students today are taking coaching from different institutions for different products. आजकल क्या होता है कि आप
एथिक्स के लिए कहीं और चले गए, जीएस के लिए कहीं और, एसए के लिए कहीं और, ऑप्शन के लिए कहीं और, तो ऑब्वियस है क्लैश होएगा। और जब क्लैश होता है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है। बट ऑप्शनल इज समथिंग दैट यू शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन, बिकॉज ये ऑप्शनल ही है जो आपको पार कराएगा, आपकी रैंक लेके आएगा, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शनल के हैं 500 मार्क्स, बाकी और किसी सब्जेक्ट के इतने मार्क्स नहीं है। इसलिए their request was genuine and that is why that day itself I announced कि चलो ठीक है ऑफ दे देंगे। तब किसी ने रेजिस्ट नहीं किया, सबने थैंक यू बोला। आज सडनली जब मैं ऐसे देखूंगा कि +1 लग रहे हैं ऑपोजिट बात पे, तो गुस्सा तो आएगा ही यार। तो जो भी मैंने कहा, आई डिड नॉट मीन दैट, के लिए आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, बट फैक्ट यही है कि जो बात कहनी होती है ना उसी टाइम कह दिया करो। नेतागिरी नेतागिरी तो बिल्कुल मत किया करो, वो पसंद नहीं है, ठीक है। और इसमें फायदा भी तुम्हारा ही है। एक ब्रेक लोगे, रिवाइज करोगे, टेस्ट की तैयारी करोगे, खत्म होएगा पेपर 1 होलिस्टिकली, उसके बाद पेपर 2 आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और पेपर 2 बहुत आसान है, सच में बहुत आसान, इसलिए आई एम नॉट वरीड अबाउट पेपर 2, नॉट एट ऑल वरीड अबाउट पेपर 2, बिकॉज आई नो इट्स वेरी इजी, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। हमने यूरोप पढ़ लिया तो इंडिया क्या है, इंडिया में तो हम पले बड़े हैं। नाउ व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? रिमेंबर, ग्लोबलाइजेशन जब हम बात करते हैं, suddenly we start thinking of this modern notion of globalization, people migrating from one place to another place, from India to America, जैसे जनरली हम सोचते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यहां से वहां चले गए। But if globalization is only that aspect, people migrating from one pocket of the world to another pocket, that has been there since forever. Even in ancient times we had globalization. Globalization is not a modern phenomenon, it has been there since forever. We had people coming into India from different pockets of the world. Huan Sang चाइना से आया यहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ने के लिए, मार्को पोलो, you see all these people like Greek who invaded India, that is also nothing but globalization. ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है क्या? एंड आज का ग्लोबलाइजेशन, हाउ इज ग्लोबलाइजेशन टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन दैट वी हैड इन दोस टाइम्स? In those times only few people could migrate from one to another pocket, but today the degree of people migrating is huge. Even anyone can migrate to any pocket in no time. पहले पैदल जाते थे लोग या घोड़े पे, अब हवाई जहाज है। इसका मतलब टुडेज ग्लोबलाइजेशन इज वेरी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव। दैट ग्लोबलाइजेशन was not so rapid and was exclusive, limited to few people. If I am an American and I am driving a car that is made in Germany, having the body of steel from Korea, tires from Malaysia, and then the gasoline that I have in my car is from UK, BP. The oil pump of which are located in Africa. Those shipments of oil coming to America by a Greek company
which have assembled parts to make ship from France. And while driving the car, if I am having a cup of coffee that is made in America, Starbucks, the beans of that coffee are imported from Africa, Brazil, and Peru, processed in China. And while driving the same car, I'm also watching TV or small mini TV, which is located on the cabinet of my car. And on that TV, I'm watching the crisis happening in Afghanistan and the repercussion that it may have on India. I am nothing, I'm global citizen. Every day you are a part and parcel of the large web of globalization. The moment you log into Facebook, you enter global world. The moment you log out, you are at your home. The world of internet has actually rapidly produced the opportunities for us to be a member of globalism. Globalism. हाँ, जूता है जापानी, बिल्कुल वही सेम चीज है. So I'll first define globalization. Globalization is a process characterized by flows. ये important word है, flows. Flows of what? Flows of objects, ideas, people. Objects, ideas, and people. This is what globalization is. Objects, ideas, and people, they flow from one place to another place freely, without being subject to regulations. This is what globalization is. Flows of objects, ideas, and people freely without being subject to regulation or restriction. Okay. See, हमने globalization unit 1 से from unit 1 till here, what we have read is nothing but globalization only. The ideas of liberty, equality, fraternity originated in France and have come here to India. This is nothing but globalization of ideas. The idea of feminism, which has its origin in Europe, and today, if you see, Indian women talking like feminist, being as radical as those feminists, talking about compensation for the work done at home, or even resist patriarchy by registering what happened to them through the global movement like Me Too. That is also nothing but reflection of globalization or globalized women. So globalization is not only about people going to America and Americans coming to India. It is about everything, flow of objects, ideas or ideologies and people freely
moving without being subject to regulation risk. Now, I'll talk about an important scholar, John Art Schalt. John Art Schalt. John Art Schalt. He has talked about dimensions of globalization. There are few dimensions of globalization. What are those dimensions? First is liberalization. Liberalization. Second is modernization or westernization. Although these are two different words, but still, John R. Schalt calls them one and the same. Okay. Modernization or westernization. Third, internationalization. Fourth, universalization. And the fifth one is de-territorialization. These are the dimensions of globalization. That when you talk about globalization, you can think on these dimensions. Now, what are these dimensions of globalization? इसका मीनिंग है क्या इन सब का? लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कम से कम रेगुलेशन हो और फ्री मार्केट इकोनॉमी हो. That means what is being produced in America that can move freely to India without or with minimum restrictions. This is what liberalization is. इंग्लैंड में एक स्कॉच बनी है, वो स्कॉच इंडिया में जाए, कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी लगे या कम से कम जीएसटी लगे. ये होता है ग्लोबलाइजेशन. अगर जीएसटी बहुत ज्यादा लग रही है स्कॉच पे, तो वो ग्लोबलाइजेशन नहीं कहलाया जाएगा, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाएगा. जितना आप ओपन हो जाओगे टू दी वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ यू, उतने आप ग्लोबल हो. जितना आप रिस्ट्रिक्शन रखोगे, जैसे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्या करता है, दो टाइप के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. ठीक है, इंट्रोवर्ट अपने अंदर ही रखते हैं सब कुछ, ज्यादा बोलते नहीं, चुप रहते हैं. एक्सट्रोवर्ट मुंह पे आता है जो बोल देते हैं. ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं थोड़े खुले भी होते हैं, सोशलाइज भी करते हैं ज्यादा. इंट्रोवर्ट ज्यादा सोशलाइज नहीं करते. तो एक्सट्रोवर्ट को आप ऐसा समझो कि ग्लोबलाइजेशन वाले लोग हैं. मतलब इन आई एम नॉट, ऐसा मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे दो इंडिविजुअल्स है वैसे दो कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ, तो वन कंट्री विच इज वेरी ओपन, सेकंड इज क्लोज्ड. So this country which is open is actually part of globalization. The second one which is closed is not part of globalization. Okay. So liberalization, that means free market. Free market, and free market means deregulation. Deregulation. Second aspect of globalization is modernization or westernization. This implies what? This implies replacement of
traditional beliefs, ideas by modern ones. This is what modernization or westernization is. इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडियाज. ठीक है. See, India is a nation, but the idea of nationalism is coming from France. That means कि हम ऑलरेडी उन आइडियाज को ले चुके हैं. ग्लोबलाइजेशन ऑफ आइडियाज तो ये भी है. नेशनलिज्म एक आइडिया है जो फ्रांस में डेवलप हुआ और यहां इंडिया में भी आ गया है. टोटलिटेरियनिज्म इज ऑल्सो वन आइडिया विच डेवलप्ड इन यूरोप. यहां पे भी आ जाता है, दिख जाता है कभी कभी. So when you see free flow of ideas coming from here to there, going from there, so that is actually globalization only. Okay. और replacement of traditional beliefs by modern idea का मतलब ये भी हो कि live in वहां पर था, live in relationship in America. Today we have live in even in India. We had LGBT movement, gay pride movement happening in Europe and America. Today you see LGBT movement, queer movement even in India. साइंस, यहाँ रिलीजन, अगर यहाँ पे भी साइंटिफिक आउटलुक आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन, दैट इज ग्लोबलाइजेशन. ओके. इंटरनेशनलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इट सिंपली इंप्लाइज क्रॉस बॉर्डर relations between countries. This is internationalization, cross-border relationship between countries. See, when you read diplomacy, in diplomacy we read tier 1, tier 2, tier 3. Okay. So that is nothing but cross-border relation between countries, that we are open to those people for a dialogue, economic dialogue, political dialogue. World Economic Forum is nothing but a jeeta jagta symbol of internationalization. United Nations Security Council is nothing but a living symbol of internationalization. ये जीएस में यूज नहीं कर पाओगे, ये जीएस में यूज नहीं कर पाओगे. जीएस में क्या यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको. एक बार ये खत्म हो जाए फिर बताता हूं मैं आपको. यूनिवर्सलाइजेशन. व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन? प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ spread of products, ideas and services. Universalization. Process of spread of product, ideas and services. Okay. That means what is being produced in America is also consumed here. What is being produced in China is also consumed here. What is being produced in India, that is also consumed there in America and China. Universalization. Spread of products, ideas and services. And the last aspect is territorialization. वैसे अगर आप इसको देखोगे इन चारों को, you will see nothing but territorialization only. इसका मीनिंग क्या होता है? territorialize. टेरिटरी आपको मालूम है, टेरिटरी. टेरिटरी मतलब क्लोज्ड. ओके. हरियाणा, पंजाब या इंडिया, पाकिस्तान,
ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, वी हैव टेरिटोरियल बाउंड्रीज, एंड ग्लोबलाइजेशन implies to move beyond territories. That means deterritorialization. Okay, and to move beyond boundary would also imply to have a free flow of products, ideas and services, to have cross border relation, to also have replacement of traditional belief by modern ones if they are better ones, if they are promoting egalitarianism, universalism, democracy, and to also have free market, that is deregulation, that is nothing, all these four is equal, all the four is equal to fifth, deterritorialization. ओके, प्रोटेक्शनिज्म को खत्म करना, ये फ्री मार्केट में ही आएगा वो, लिबरलाइजेशन, ओके, deregulation. So this was all about dimensions of globalization. Now I'll talk about one important scholar, David Held. Now this is important one. ये थोड़ा होलिस्टिक कवरेज है डेविड हेल्ड की, ये आपको डिफरेंट डायमेंशन बताएगा ग्लोबलाइजेशन का, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड बैलेंस्ड वन आल्सो, ओके, ऑल द थ्री. डेविड हेल्ड बोलता है कि देयर आर थ्री स्कूल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देयर आर थ्री स्कूल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. फर्स्ट इज हाइपर ग्लोबलाइजर्स. Second are skeptics, and third are transformationalists. Hyper globalizers, skeptics and transformationalists. ठीक है, अब ये क्या है? Now first I'll talk about hyper globalizers. Hyper globalizers are of two type: pro globalist and anti globalist. Which means optimist and pessimist. These are the two types of hyper globalizers, who are first who favor globalization, second people who do not favor globalization. अब देखो ये क्या बोलते हैं, पहले इनका सुन लेते हैं. They say that globalization has been a positive process. Positive process which involved one-way transfer, one-way transfer from west to non-west. Positive process which involved one-way transfer from west to non-west. Transfer of what? पहले ये लिख लो. वेस्ट से नॉन वेस्ट. ये अच्छा है ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि कई सारी चीजें और आइडियाज वहां से आई हैं, यहां तक आई हैं, सबके पास आई हैं. वो अच्छा है क्योंकि ट्रांसफर क्या क्या हुआ. देखो, नियोलिबरलिज्म ट्रांसफर हुआ,
Today, everyone talk about minimum barriers, free trade agreement, comprehensive economic partnership agreement, CEPA. We talk about market unions. So everyone is trying to be neoliberal in his approach. And this has been possible only because of globalization. It has been a positive process. कि सारे बैरियर्स खत्म हो रहे हैं, फ्री मार्केट की तरफ जा रहे हैं, नियोलिबरलिज्म. आज की डेट में अगर आपको कोई चीज, कोई भी वैरायटी आपको मिल रही है मार्केट में, आज आप मॉल में जाओगे किसी और यू कैन हैव चॉकलेट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, दैट हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड neoliberalism. Okay. Second, democracy. डेमोक्रेसी का आइडिया कहां से आया? वहीं से आया. अच्छा अच्छा ही सब कुछ मिला है हमें. डेमोक्रेसी अमेरिका से आया, फ्रांस से आया, इंडिया, चॉकलेट्स वहां से आई, यहां पर खाना पीना आया, सब वहां से, कपड़े आए, अच्छी लैंग्वेज आई, अच्छी एजुकेशन आई, सब कुछ बढ़िया हुआ. ग्लोबलाइजेशन में खराब क्या है? ठीक है, neoliberalism, democracy. And there are many people who support these things. Okay, there is one scholar like, इसी में बता देता हूं मैं, थॉमस फ्राइडमैन. He is a pro-globalist. He favors globalization. Okay. जिंदा भी है अभी, इकोनॉमिस्ट, काफी फेमस है. इसने क्या बोला है? ये बोलता है कि neoliberalism is a golden straitjacket. Golden straitjacket. भाई जिसने नियोलिबरलिज्म का जैकेट पहन लिया उसकी चांदी ही चांदी है. क्यों? When you have wealth at the top, when you have development happening, the benefits of that will obviously trickle down to the lower level as well. अगर आप अमीर हो तो आप कंपनी खोलोगे तो उसका फायदा किसको मिलेगा? लोगों को ही, उनको जॉब मिलेगी. People will get jobs, people will get consumption, behavior change. Okay, change in consumption behavior, consumption pattern, consumerism बढ़ेगा. So neoliberalism is a golden straitjacket. Okay, which means trickle down approach. It is very much like Adam Smith's idea of invisible hand. Adam Smith also promoted neoliberalism only on the same principle. So Friedman is a follower of Adam Smith. Okay. Now this is what the pro-globalism would be largely. Okay. And who will help the underdeveloped or the non-Western countries to be equally wealthy and to adopt neoliberalism and democracy? It is the holy alliance of multilateral institutions like World Bank and IMF.
So World Bank and IMF are agents of globalization who are there to make the borders which are closed open and to also help the traditional societies to become modern. Okay, so that way globalization is beneficial. WTO and IMF, he called it holy alliance between these two, which are going to help people adopt globalization and to yield the benefits of globalization. Okay, so this was all about pro-globalist. Anti-globalist, what do they say? The anti-globalists are those people who believe that what we see in the name of globalization is actually nothing but cultural imperialism. Cultural imperialism. That means the more society get globalized, the more societies look similar. जितना इंडिया फ्री होएगा, फ्री मार्केट करेगा जितना जितना, उतना ही इंडिया अमेरिका जैसा दिखना शुरू कर देगा. क्योंकि फ्री मार्केट का मतलब क्या है? उधर से आने दो सामान जितना आ रहा है, कम से कम रेगुलेशन लगाओ, ठीक है. और जो फ्री मार्केट के रूल्स हैं तुम्हें मालूम ही है अच्छे से, वो ज्यादा फेवर करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को, क्योंकि उनको चाहिए फ्री मार्केट, क्योंकि मार्केट हम है. वो मार्केट उन्हें फ्री चाहिए क्योंकि उन्हें मालूम है हम सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं. 1.2 के बिलियन जो एशिया की पॉपुलेशन है, कंज्यूमरिज्म है पूरा. वो फ्री मार्केट का आइडिया उनका है, वो चाहते हैं मार्केट फ्री हो. और मार्केट फ्री होने का मतलब क्या है? कि सब के सब एक जैसे हो जाए, सबका टेस्ट वैसा हो जाए, सबकी थिंकिंग वैसी हो जाए. एंड अल्टीमेटली pessimists are saying that cultural imperialism is going to establish hegemony of the West on the non-Westerns. And this will automatically result into homogenization of the world. Homogenization of the world. So you will speak American, you will think American, you may even eat American. You may watch American. Everything would be American or European. Globalization is nothing but Americanization. Something like this. ये ऐसा बोल रहे हैं. Okay. Now, this was pessimist. Okay. So two things are very clear from these two arguments. There is no plus or minus about globalization. Both aspects are there. And both are equally vocal about those aspects. They are equally vehement and adamant on those ideas that it is going to be beneficial. These are equally vocal about these ideas that it is not going to be beneficial. It is going to be beneficial only to the West, not to the non-Western. So what do you mean by benefits? Benefits to whom? Pessimists are those people. Benefits to whom? किसके फायदे? ठीक है. Now, in two more scholars I will introduce under optimism only. Okay, optimism. Same. Just two more scholars. Okay. First, Kenichi Omei. He says that globalization involves
बॉर्डरलेस वर्ल्ड, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये तो मतलब आप समझते होगे बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ओके, और इसी का एक क्रिटिक और आता है यहीं से, पेसिमिस्ट से। बॉर्डरलेस वर्ल्ड सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फ्री फ्लो होएगा हर एक चीज का, बट ये बोलते हैं बॉर्डरलेस का एक्चुअली आइडिया क्या है? डी नेशनलाइजेशन। डी नेशनलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी नेशनलाइजेशन? मतलब नेशन स्टेट्स का रेलेवेंस खत्म हो जाएगा, बॉर्डरलेस वर्ल्ड का मतलब है नेशन स्टेट का रेलेवेंस खत्म। अभी तुम देखो, I'll give you example. Most of the things, most of the economic disputes or political dispute you would see today, in which India is involved, along with Pakistan or with any other country that is external to it, which India may consider it as internal dispute, you would somehow see multilateral institutions giving judgment on them. कोई डिस्प्यूट होएगा इंडिया का, इंडियन फिशरमैन का डिस्प्यूट होएगा श्रीलंका के साथ, एक बाहर की बॉडी आ जाएगी बताने के लिए कौन सही है कौन गलत। इंडिया का इशू होएगा पाकिस्तान में, कुछ बाहर की बॉडी आ जाएगी फिर से बताने कौन सही है कौन गलत। तो चाहे मैटर पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, you would see gradually multilateral institutions are now pronouncing judgments on something that we think is our internal matter. And this means that nation state as a concept is losing its relevance. Nation state is losing its relevance. अभी तुम देखो, most of the FDIs today have become automatic route. ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है एफडीआई में? कि भाई ठीक है, कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं होगी हमारे पास, आप आओ अपना पैसा डालो और अपना बिजनेस शुरू करो, रेगुलेशन नहीं होगी, कम से कम होगी। ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या है? एंड देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी हैड गवर्नमेंट अप्रूवल दैट वाज कंपल्सरली रिक्वायर्ड फॉर एनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू पास। वी हैड इवन डेडिकेटेड बॉडी फॉर दैट, Foreign Investment Promotion Board, FIPB, that has also been abolished. FIPB is no more. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या करता था? वो रेगुलेट करता था इन्वेस्टमेंट्स को, ठीक है। अब वो भी नहीं होता, अब ऑटोमेटिक रूट 100% एफडीआई की तरफ जा रहे हैं। अब हम कोई भी सेक्टर आप देख लो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स 100% एफडीआई, दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन, जिसको न्यू लिबरलिज्म कहते हैं। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? स्टेट का कोई रोल बचेगा नहीं, नेशन स्टेट का रोल वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो स्टेट का रोल क्या होएगा फिर? स्टेट का रोल सिर्फ होएगा फैसिलिटेट करना। स्टेट का रोल क्या होएगा मैं आपको बताता हूँ। स्टेट, जैसे आपका, जब आपके घर पे गेस्ट आता है तो आपका रोल क्या होता है? चाय पूछना, पकौड़े पूछना, इतना ही रोल रहता है, ठीक है। मान लो मान लो कि आई एम वर्किंग एज अ डोमेस्टिक मेड इन समवन्स हाउस, what would be my role? My role would only be to ask whether you want this or not, something like ऐसे मैं बार बार आऊंगा पूछूंगा, अच्छा आपको चाहिए, ठीक है अभी ले आता हूं। दैट मीन्स ऐसा ही कुछ स्टेट का रोल है, स्टेट वुड बिकम डोमेस्टिक मेड, समथिंग लाइक डोमेस्टिक मेड टू दी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस। ओके, तो स्टेट वुड आस्क देम व्हाट डू यू वांट, दे वुड से थोड़ा ये अपना टैक्स वैक्स हटाओ, अपना खत्म करो और ऑटोमेटिक रूट करो और हमको यहाँ सेक्टर को ओपन करो, हमको एफडीआई करना है, पैसा फेंकना है, ठीक है आओ आप करो, खत्म हो जाएगा सारा। अब जो है फ्री मार्केट के नाम पे प्राइवेटाइजेशन होता है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स का भी, जिसको हम स्ट्रेटेजिक बोलते थे टाइम पे, ठीक है।
और ये शो करता है नेशन स्टेट अपने रेलेवेंस लूज कर रहा है। अब रेलेवेंट कौन हो गया है? ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम रेलेवेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, they have become relevant. United Nations Security Council has gained relevance more and more. Nation states are declining. Denationalization, this is also one way to look at the globalization, and that is given to us by these people, pessimists. Okay, चलो, now let me see अगर कोई point miss ना हो गया हो. Okay. Under optimism, I'll talk about one more man. Okay, Marshall McLuhan. Marshall McLuhan. He has coined one term. Global village. Global village. And he is happy about globalization. Okay. What is the meaning of global village? What happens in village generally? In village, na, village, you know, is very small in comparison to city. Village में बहुत कम लोग रहते हैं, शहर में बहुत लोग रहते हैं. Because in village very few people live, the population density is also very low in a village. You would see the transmission of information is very fast. देखो, कुछ कुछ गांव होते हैं, 20 घर होते हैं उसके अंदर, 30 घर, 40 घर, 50 घर, ऐसे ऐसे गांव है. एक घर में कुछ हुआ, 50 घरों में फटाफट खबर जाती है. ठीक है, वो साइकिल लेके आएगा और चिल्लाएगा पूरे रास्ते में, ऐसे ऐसे हो गया, फटाफट सबको पता जाता है. अरे वो, ये विलेज में ऐसा होता है. शहर में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा शहर है. But Marshall McLuhan is saying that because of globalization, the world has become global village. इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो, फटाफट एक इंसिडेंट हुआ अगर अफगानिस्तान का, अमेरिका में फटाफट पहुंच जाएगा, इंडिया में उसी टाइम आ जाएगा. कोई भी खबर अफगानिस्तान में चल रही होगी, उसी टाइम पहुंचेगी आपको. उधर 1 मिनट पहले हुई होगी, आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट मिनट. जैसे गांव में फटाफट खबर फैलती है. So this has actually empowered people. They have become informed citizen, not just citizen, but cosmopolitan citizen. Okay. It has spread, or it has made, you can say, dissemination of information rapid, and that is why global village. डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत जल्दी जल्दी होता है. आप कुछ फेसबुक पे डालोगे, आपने अपडेट किया अपना स्टेटस, उसी टाइम अमेरिका में ऑब्वियसली फेसबुक को यूज कर रहा होगा, वो आपका दोस्त होगा, उसको भी फटाफट दिख जाएगा, अच्छा है आज ये चल रहा है इसके दिमाग में. तो ये है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग. ग्लोबल विलेज. इंटरनेट में आप देखो, जो पबजी जब चलता था इंडिया में ना, पबजी, तो व्हेन वी यूज्ड टू प्ले पबजी, मैं तो नहीं खेलता था, व्हेन वी यूज्ड टू प्ले पबजी, so every people, every individual who was a gamer and who used to play PUBG, we could see many people coming from America, who hail from America, China. They were also members of that team game or war between two teams in PUBG. आप बैठे दिल्ली में हो, आपका एक दोस्त है अमेरिका का, वो आपकी टीम में है, और आप खेल रहे हो किसी और आदमी के अगेंस्ट जो मुंबई में है और उसका दोस्त है चाइना का, और ये सब आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हो.
ये क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबल विलेज। ओके, now this is all about optimism and pessimism. Let me now talk about skeptics. Skeptic is different school altogether. Skeptic does not mean pessimist. Skeptic का मीनिंग कुछ अलग है. Skeptic का मतलब क्या है? What is the difference between skepticism and pessimism? Pessimism means you are anti. Skepticism means you are doubtful. You are not against. You are doubtful. You are skeptical. ठीक है. स्केप्टिक होने का मतलब क्रिटिक नहीं होता. स्केप्टिक मतलब डाउटफुल हो आप. ठीक है. तो स्केप्टिक वो होते हैं जो ये बोलेंगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन है? ग्लोबलाइजेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. यानी ये इस चीज को मानते ही नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन होता है. फिर क्या होता है? और ये क्या बोल रहे हैं ऐसा? ये बोल रहे हैं ग्लोबलाइजेशन इज अ मिथ. Globalization is a myth. Why? There is one scholar under skepticism. His name is Paul Hurst. He says what we see in the name of globalization is nothing but regionalization. रीजनलाइजेशन ज्यादा है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है. मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है. राइट डाउन. Hurst believed that it is regionalization and not globalization that is the reality of the world. Paul Hurst. इसका मीनिंग क्या है? देखो, maximum alliance that you would see in the name of agreements or trade agreements that you see are often between regions that are very similar to each other. जैसे नाफ्टा होएगा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाफ्टा. You would see European Union. You would see African Union. You would see SARC. ये क्या है? Would you see Trans-Pacific Partnership TPP? TPP पे डिबेट शुरू हो जाएंगे. RCEP उसके फंक्शनिंग में डिबेट शुरू हो जाएंगे. ASEAN is also regionalization. ASEAN is also regionalization. Association of Southeast Asian Nations. साउथ ईस्ट एशिया के जो है, तो ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, ये तो रीजनलाइजेशन है ना. एक रीजन के लोग आपस में गुट बना के बैठे हैं, इसको ग्लोबलाइजेशन कैसे बोल सकते हो? सही बात है कि गलत? हाँ, G20 एक्सेप्शन है. मतलब मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं कि ये क्यों ग्लोबलाइजेशन को मिथ बोलते हैं. ठीक है. तो उनकी नजर से मैं देखूं दुनिया को तो मुझे वो दिखेंगे, ये सारे रीजनल हब्स आपको ज्यादा दिखेंगे. ठीक है. इनफैक्ट G20 को भी अगर आप देखोगे ना, G20 को भी, G20 हो गया या OECD हो गया,
अरब लीग हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया, ठीक है। G20 को भी अगर मैं देखूं तो G20 में आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के आपको दिख जाएंगे मिनिस्टर्स और फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हैं, ठीक है, और गवर्नर्स। लेकिन जब आप बात करोगे G4, G7, G8, ओके, जो कि टॉप का ग्रुपिंग है, वो अगेन एक ऐसा ग्रुपिंग है जो कि टाइटली क्लोज्ड है, विच इज नॉट ओपन टू एनीवन। आई मीन it would take a very long time for India to be a member of G4. India has been trying very hard to be a permanent member of United Nations Security Council, जो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो वही exclusionary social closure है which operates at that level also. Okay, they would not want the outsiders to become their members. When we know that India has had major contribution in United Nations peacekeeping force, maximum force जो soldiers हैं इंडिया के होते हैं यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्सेस में, बट इंडिया यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप में आपको दिखेगा नहीं। आपको रीजनलाइजेशन दिखेगा, कुछ क्लोज अलाइज हैं ऑलरेडी, वही आपस में ट्रेड ब्लॉक बना लेते हैं, बाहर के लिए ओपन नहीं रहते वो। ओके, ठीक है। बेसिकली व्हाट ही इज सेइंग इज ग्लोबल अग्रीमेंट्स आर वेरी लेस इन नंबर, रीजनल अग्रीमेंट्स आर मोर एंड मोर, तो ग्लोबलाइजेशन इज देयरफॉर अ मिथ। ठीक है, उसका आइडिया भी चलो उस नजर से। अब लास्ट स्कॉलर जो है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट्स। That is the last school, the third school. Transformationalists would say, first of all, कि अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा globalization is a one-way positive process. Second, we read globalization is a one-way negative process. Pessimist. And third, we read globalization do not exist, it is a myth. हमने यही तीन पढ़े। अब चौथा जो है, मतलब जो तीसरा है बेसिकली, वो क्या है? वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव और वन वे प्रोसेस, रादर इट इज a two-way process. It is a two-way process. Two-way process that runs on adaptive capacity of the nation states. Adaptive capacities of the nation states. Okay. Adaptive capacities of the nation states. Okay, that runs on adaptive capacity of the nation states. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। If you remember the first school that was hyper globalizers, they believed that nation state will lose its relevance in the face of neoliberalism. यहां तक समझे? ये उन्होंने बोला था कि नेशन स्टेट्स अपना रेलेवेंस खत्म कर देंगे इन द फेस ऑफ नियोलिबरलिज्म, इन द फेस ऑफ फ्री मार्केट। ये बोलते हैं, these people say nation states never lose their relevance,
Never. Nation states adapt to the ongoing process. अभी तुम देखो, when coronavirus struck the nation states world over, it was the vaccine nationalism that was at its peak. People had become once again dependent on the state to help them get over the coronavirus. It was vaccine nationalism. And India was dependent on those global states, America, Russia, for the development of vaccine. So that shows globalization was there. We had a linkage, and for that matter, if you remember, I don't know कि आपने उस टाइम शुरू की थी तैयारी की नहीं, लास्ट ईयर लॉकडाउन में ही, जैसे ब्राजील है, ब्राजील को हमने वैक्सीन देने की बात करी थी, एक हाथ बढ़ाया था हमने ब्राजील की तरफ, हम आपको वैक्सीन देंगे। ऐसे हमने कईयों की तरफ हाथ बढ़ाया, हम आपको देंगे वैक्सीन। कहीं से हम वैक्सीन ले रहे थे, कहीं पे हम दे भी रहे थे, तो दोनों चल रहा था, टू वे प्रोसेस था। और कभी कभी तो इतना ज्यादा दे दिया कि people who were victim of coronavirus, they actually had to go back खाली हाथ कि वैक्सीन खत्म हो गई है। और फिर पता चलता है कि इंडिया क्योंकि बाहर की कंट्रीज को दे रहा है वैक्सीन, तो खत्म होगी। फिर स्पटनिक आया, स्पटनिक वैक्सीन रशिया से। तो आपको पता चलेगा इंडिया एज अ नेशन स्टेट अडेप्टेड। It is the nation state only. During lockdown, what happened? It was believed that China may start dumping its goods, may start capturing market because Indian economy was going down like anything. And therefore, what India did, India got back to the government approval route in lockdown for a very little time, specifically to counter the Chinese investment. So you see India also doing structural adjustment as a nation state. So nation state adapt. It is not that nation state declines and world institutions, global institutions start dominating. Nation states adapt to the supremacy or to the ongoing processes. Okay. So globalization is not positive, negative, it is two-way process. अब तुम देखो, अगर इंडिया में मैकडोनल्ड है, तो उस मैकडोनल्ड के अंदर मैक आलू टिक्की है। तो ऐसा नहीं है कि हमको अडेप्ट करना पड़ता है, उनको भी अडेप्ट करना पड़ा है हमारे साथ। एंड दिस इज व्हाट रोलैंड रॉबर्टसन calls as localization. Government also banned the takeover of Indian firm by Chinese firm. Yes, ये अडेप्टेशन शो करता है, स्टेट नेशन स्टेट का रेलेवेंस खत्म नहीं हुआ है। ओके, so when you see two-way process, you see globalization. Localization. If you have any sort of nuclear reactor being established here, you would also see some of the components of the workforce that is taken from Indian soil only in the making of that reactor. It is not completely global component or global company. So you see adaptation process that is going on. Globalization term given by Roland Robertson. Roland Robertson. Okay. So it is not about positive, negative. It's about adaptation.
ओके, पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता रहता है. What is important is adaptation. How we adapt as a nation state to the ongoing crisis. And since it is the globalization that is going on largely, not globalization per se, therefore to say that world will become homogenized would be wrong. पेसिमिस्ट तो यही बोलते थे, वर्ल्ड होमोजेनाइजेशन, वर्ल्ड में होमोजेनाइजेशन रहेगा, सब लोग अमेरिकन की तरह बोलना शुरू कर देंगे, अमेरिकन पहनना शुरू कर देंगे, अमेरिकन खाना शुरू कर देंगे. ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन जो है मैकडोनल्ड जरूर खाते होंगे लेकिन मैक आलू टिक्की नहीं खाएंगे, और मैक आलू टिक्की यहीं आया है और कहीं नहीं आया. उसी तरह से और भी कई एग्जांपल है, जैसे डोमिनोज पिज्जा है. डोमिनोज पिज्जा देखो कितने फ्लेवर्स निकालता है इंडिया में, जो बाहर कहीं नहीं है. तंदूरी पनीर टिक्का है, उसमें पता नहीं क्या चिकन टिक्का, वो सब निकालता है. बाहर थोड़ा ना ये फ्लेवर्स मिलते हैं, बाहर अलग फ्लेवर्स है. तो ये कहना कि हम सब एक जैसे हो जाएंगे वो गलत है. उल्टा सही क्या है? सही ये है कि लोकल विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड बाय ग्लोबल, रादर with the dialectics of global and local we will have something called we call as glocal. तो ये ग्लोबल आइडेंटिटी लोकल आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देगी, वो गलत है. उल्टा ग्लोबल और लोकल के डायलेक्टिक्स से ग्लोकल निकलेगा. दिस इज व्हाट एंथनी गिडन सेज. राइट डाउन. एंथनी गिडन बिलीव्ड, एंथनी गिडन्स बिलीव्ड, जो कि काफी हद तक ग्लोबलाइजेशन से ही इंस्पायर्ड है ये आइडिया. जस्ट अ सेकेंड. Yes, Anthony Giddens believed that people will become more and more glocal, more and more glocal, GLOCAL, ये वाला glocal. Their taste, their opinion, their belief, their taste, belief, and opinion will also be local. Will also get globalized. Therefore, globalization should not be seen as a threat to. Globalization should not be seen as a threat to the indigenous culture or local. Globalization as a process should not be seen as a threat to indigenous local culture or traditional values. Because it results in hybridization. It results in hybridization. Hybridization, ये हाइब्रिड है, ग्लोबल और लोकल का हाइब्रिड बन गया है. ऐसा नहीं कि लोकल खत्म हो गया, ग्लोबल उसके ऊपर आ गया है. हाइब्रिड आइडेंटिटीज फॉर्मेशन हो रही है. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? Mix. When I go out with my friends,
I eat pasta and pizza. When I come back home, I eat dal and roti with my mother and father. Am I global? Am I local? No, I'm both. When I have to go to a party where hi-fi people have come, I would prefer speaking in English. When I would go home, I would prefer speaking in Hindi. Am I global or local? I'm both. हाइब्रिड हूं मैं. When I would go for shopping, I would prefer wearing, I may prefer wearing jeans, that is global western, but then on the jeans, on top of the jeans, I would prefer wearing a kurta. Kurta with jeans is a hybrid combination not found either in West or in any other country which has given us jeans. Okay. और कुर्ता, कुर्ता अगर पंजाब यहां से आया है, हरियाणा से, पंजाब से, या नॉर्थ इंडिया से, या साउथ इंडिया से, जहां से भी आए हो, तो कुर्ता विद जीन्स ये दोनों से आया है. ठीक है. डेमोक्रेसी बाहर से आई है, अग्रीड, but the concept of village assembly is locally found here in India. And when you have village assembly and democracy, it results in panchayati raj institution hybrid. Global with local. Democratic decentralization. The hybridization. So to say local will fade away, global will take over, homogenize the world would be wrong. Okay. Eating rice with spoon, हाँ ठीक है. हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स है. हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम भी है उसके अंदर इंश्राइंड, और बाहर के वेस्टर्न आइडियाज भी है. ठीक है, आपको ये सब ऐसे सोचना है. अब ये मैंने क्या बोला, ये सब जो मैंने बताया ये आपको जीएस में हेल्प करेगा, ये सब. ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला लास्ट में, ट्रांसफॉर्मेशनलिज्म आपको जीएस में हेल्प करेगा ज्यादा. सोशो में आपको तीनों ही हेल्प करेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की डिमांड क्या है. और क्वेश्चन ऐसा है कि ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन हर साल आपको आएगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आएगा. और बाकी ऐसी डायमेंशंस है ग्लोबलाइजेशन की जो आप धीरे धीरे सीखोगे. आई मीन आई कुड हैव टॉक्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फैमिली, जैसे जीएस में होता है. ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एल्डरली, ये जीएस कंपोनेंट, जीएस स्पेसिफिक कंपोनेंट हो जाता है. ये एल्डरली पे फोकस ग्लोबलाइजेशन का, एजुकेशन पे फोकस ग्लोबलाइजेशन का. अगर बट मैं ऐसे देखूं एजुकेशन पे फोकस ग्लोबलाइजेशन का, तो क्या एजुकेशन पूरी वेस्टर्नाइज हो गई है? अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हम ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों में से कहीं पे भी फिट हो सकते हैं. बट अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट हैं तो हम ये बताएंगे कि एजुकेशन एज अ सेक्टर इंडिया का अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वी हैव ओनली अडॉप्टेड वेस्टर्न एजुकेशन, वी हैव आल्सो गिवन देम इंडियन हिंदू फिलोसॉफिकल एजुकेशन व्हिच दे आर टीचिंग इन दी वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज. हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में, बाहर आप किसी यूनिवर्सिटी जाओगे वहां बुद्धिज्म के ऊपर लेक्चर हैं, हिंदुइज्म के ऊपर लेक्चर्स होते हैं. गांधी को पढ़ाया जाता है बाहर, नेहरू को पढ़ाया जाता है. जैसे हम लोग यहाँ कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, वो लोग वहां गांधी को पढ़ते हैं. तो एजुकेशन, तो आप बोलते हो ग्लोबलाइजेशन जब आ गया तो ये इसका मतलब नहीं वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है. टू वे प्रोसेस है, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट प्रोसेस. अंडरस्टूड? ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोबलाइजेशन. And with this, I would end this unit. Now only one thing is left in this unit, that is agents of social change. Agents of social change. Since this is very easy topic, इसमें मेरे बताने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद से पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा. ऑनेस्टली बताऊं, ग्लोबलाइजेशन मेरे को लग रहा था कि मेरे को बताना चाहिए आपको.
एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज इज वेरी सिंपल, इसमें आपको बताना कुछ नहीं है. हाउ एजुकेशन लीड्स टू सोशल चेंज, हाउ मीडिया लीड्स टू सोशल चेंज, हाउ टेक्नोलॉजी लीड्स टू सोशल चेंज. ठीक है, ये 3 चीजें हैं. इसका मैं क्या करूंगा कि आई विल गिव यू नोट्स, प्रेफरेबली कोई अच्छे से नोट्स आपको मैं दूंगा इस टॉपिक के लिए, जिसको पढ़ के आपका एक ही बारी में काम हो जाए. ठीक है. टुमारो विल बिगिन विद वर्क एंड इकोनॉमी, वो भी इंपॉर्टेंट यूनिट है. वैसे देखो, so far 7 units we have finished, and these 7 cover actually 90% of your syllabus, 90% of your paper, 92% I would say. The rest 3 topics constitute 10% maximum. तो 90% तो आपका हो गया है पेपर 1 का. तो वर्क एंड इकोनॉमी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट आई डू इज, व्हाट आई एम प्लानिंग इज नाउ, tomorrow would be your last day. Okay, tomorrow would be your last day for paper 1. So what I'll do is that family I'll take when I'll teach you paper 2, क्योंकि paper 2 में family फिर से आएगा. Okay, so I'll teach family in paper 2 only, because the questions in paper 1 are also coming from paper 2 only. family का जो मैंने देखा previous year questions, पेपर 2 के क्वेश्चंस ही पेपर 1 में पूछ रहे हो. AM शाह के ऊपर पूछते हैं वो, हीरावती कारवे पूछ लेते हैं, सवाल तो वहीं के पूछ रहे हैं वो. तो इसलिए इंस्टेड ऑफ टीचिंग यू थ्योरीज जो कि रेलेवेंट नहीं है, यू नो, आई डोंट वांट टू टीच यू मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फैमिली, फंक्शनलिस्ट थ्योरी, वो सब रेलेवेंट नहीं है. तो पढ़ने में मजा आता है लेकिन वो एग्जाम में काम नहीं आएगा. तो मैं चाहता हूँ मैं बड़ा फोकस्ड रहूँ अब आगे के यूनिट्स में जो एग्जाम्स फैसेगा. अभी तक जो मैंने पढ़ाया दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिकली, चीज़ों को आप हर तरफ से देखो. बट अब जब हम पढ़ेंगे दैट विल बी हाईली एग्जाम सेंट्रिक. ठीक है. तो टुमारो विल बिगिन विद वर्क एंड इकोनॉमी. Research method, what I'll do is research method I'll take it after break, after 10 days break. Okay, तो जो आपका जो टेस्ट होएगा, in your test that is test 4, in your test I would not ask you any question on family and research. family and research नहीं आएगा, बाकी सब आएगा. अभी इनको मैं आज बोल दूंगा, आपको नोटिफिकेशन भी दे देंगे इसके ऊपर. ठीक है. बाकी चीजें आप अच्छे से पढ़ना. फैमिली हम वहीं कर लेंगे, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए. Tomorrow we will finish work and economy. Tomorrow will be the last class till 6 p.m. Okay. One class after break on left topic, sir. हाँ, break खत्म होते ही सबसे पहले we will deal with the research method and then we'll start paper 2. ठीक है. Research method will take me 1 day, 1 full day. In fact, I don't want to give it 1 full day, but ठीक है, बनता है इतना.